Hello students, here I am Gargi Pamar, Assistant Professor BBA in St. Andrews Institute of Technology and Management, Gurgaon. So here I am back with an online lecture series on company account subject. So let's start the lecture. In today's lecture, we are going to cover Accounting Standard 17, one of the topic of your third unit, that is Accounting Standard 17. So let's start the lecture. First of all, the name of Accounting Standard 17 is segment reporting. So what Accounting Standard 17 says? What does Accounting Standard 17 says? Accounting Standard 17 deals with the segment reporting that was established to help better understand performance risk and return of an enterprise. It deals with the provision pertaining to the reporting of segments information in order to meet the needs of the users of financial statements. So basically, this Accounting Standard 17 is only deals with reporting requirements. Okay, so this is on Accounting Standard 17 only deals with the reporting requirements. It does not deal with any accounting treatment or accounting rules and regulations. So this Accounting Standard is only given for reporting. So see, what is why does this Accounting Standard come into exist? See, there is various segment in an enterprise or in a business. तो कौन से ऐसे सेगमेंट है जिनकी रिपोर्टिंग करना, जिनको रिपोर्ट करना जरूरी है, जिनकी रिकॉर्डिंग करना जरूरी है, कौन से ऐसे सेगमेंट्स है जिनकी रिपोर्टिंग नीडेड नहीं है? तो अगर हम हर एक सेगमेंट की रिपोर्टिंग करने लगे तो देयर इज एन नंबर ऑफ सेगमेंट इन एन एंटरप्राइज और देयर इज many number of segments in the organization and एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं, तो सारी ऑर्गेनाइजेशन में मिला के बहुत सारे सेगमेंट्स होंगे और अगर हम हर एक सेगमेंट की रिपोर्टिंग करने लगे तो देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ सेगमेंट्स विल बी देयर. So this is not possible that we record or that we report all the segments. We do reporting of all the segments. That's why we divided these segments in two parts. Like one is reporting segments and one is unreporting segments. That means ऐसे segments जिनकी reporting needed है और ऐसे segments जिनकी reporting needed नहीं है तो उनकी reporting हम देंगे. Now, how will we recognize that this particular segment is reporting segment or unreporting segment? For this accounting standard deals with that problem. इस accounting standard में ये बताया गया कौन-कौन से ऐसे segments हैं जो reporting होंगे और कौन से segments हैं जो reporting नहीं होंगे. Okay? Yes. So let's understand. First of all, see the applicability of the accounting standard. So on which type of enterprises this accounting standard 17 will apply? So see, the accounting standard 17 will applicable on following enterprises. Enterprises with equity or debt security listed in India and outside India. So enterprises which whose equity and debt security is listed in India or outside India. Enterprises in the process of listing their equity or debt security as acknowledged by the board of directors, banks including cooperative banks, financial institutions, enterprises into insurance business, enterprises having turnover exceeding rupees 15 crores immediately preceding the accounting period. Here, turnover does not include any other income. Enterprises having borrowings including public deposits exceeding rupees 10 crores during a given accounting period, and holding in subsidiary enterprises of any of above during the given accounting period. So on these institutions or on these enterprises, the accounting standard 17 will be applicable. Okay, so in सारी organization पे enterprises पे accounting standard 17 applicable होगा. Now see the needs of segment reporting. Segment reporting accounting standard 17 segment reporting की need क्यों पड़ी? So see, what is the need of segment reporting? Diversified companies presents a unique type of problem for investment decision making. The performance of the diversified company can be judged from the performance of all the segments. The success of diversified company depends on success of all the segments. That is why segmental disclosure is company's annual report are more useful to investors and other users. Institute of Chartered Accountants of India has emphasized on segment reporting reason being it can be helpful to users financial statement in many ways. Like users of financial statement can better understand the performance of an enterprise. User can better
assess the risk and return of the enterprise. User can make more informed judgment about the enterprise judgment about the enterprises as a whole. So basically आपके जो outsiders हैं, जो users हैं आपके financial statement के, जो आपके financial statement को use करेंगे, अगर उसमें segment reporting होगी, अलग-अलग segment की अलग-अलग अगर reporting होगी, तो वो easy होगा to understand. That will be easy to understand to the outsiders or the users of financial statement. Okay, and user can better assess the risk and return of the enterprise. See what which segment has which type of risk and which type of return is giving. A particular segment is given. तो आपका किस पर्टिकुलर सेगमेंट का क्या रिस्क है और कितना उस सेगमेंट से रिटर्न आ रहा है और पूरे एंटरप्राइजेस से क्या रिस्क और रिटर्न आ रहा है, वो आपको अंडरस्टैंड करने में इजी रहेगा. दैट विल आल्सो बी इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, देन यूजर्स कैन मेक मोर इन्फॉर्म्ड जजमेंट अबाउट द एंटरप्राइजेस जजमेंट अबाउट द एंटरप्राइज एज अ होल. तो यूजर जो होंगे वो अपनी जजमेंट बना पाएंगे फॉर द एंटरप्राइजेस. तो फॉर द पर्पस ऑफ these three conditions, or for the purpose to fulfill these three requirements, this accounting standard comes into exist. Okay. Yes. Now let's move on. There is another requirement, that is users can benefit from the enhanced degree of comparability with the other enterprises. If you do the segment reporting, then the users of financial statement can compare your segment to the different enterprises segment. Okay, तो एक एंटरप्राइजेस को दूसरे एंटरप्राइजेस से इजीली कंपेयर कर पाएंगे, क्योंकि अलग-अलग सेगमेंट्स में अलग-अलग रिपोर्टिंग होगी, तो वो अलग-अलग सेपरेटली आपको कंपेयर कर सकते हैं. ऐसे एंटरप्राइजेस को दूसरी एंटरप्राइजेस से कंपेयर कर सकते हैं. ओके, नाउ देयर इज टू टाइप ऑफ सेगमेंट. फर्स्ट इज बिजनेस सेगमेंट एंड सेकंड इज ज्योग्राफिकल सेगमेंट. So what do you understand by business segments and what do you understand by geographical segments? So see, business segments. Business segments is a distinguishable unit of enterprises engaged in providing individual products or services or a group of related products or services. Further, it is subject to risk or returns that are different from those or other business segments. So, business segments में कुछ different kind की units आएगी enterprises की, different type की units जो किसमें engage होगी, providing individual products or services और group of related products or services में engage होगी. Okay, तो एक सेगमेंट में आप ऐसे ब्रांचेस को या ऐसी यूनिट्स को रखेंगे जो एक सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देने में engage है, और एक दूसरे सेगमेंट में दूसरे बिजनेस सेगमेंट में आप ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सप्लाई करने वाले यूनिट्स को रखेंगे जो सेम टाइप के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है. ओके, देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द जियोग्राफिकल सेगमेंट? Geographical segments is the distinguishable unit of an enterprise engaged in providing products or services within a particular economic environment. Further, it is the subject to risk and return that are different from units operating in the other economic environment. So what is a geographical segment? See, let's have an example. Say if you have different branch in different countries, okay, then जिन कंट्रीज में आपकी जैसे इंडिया में ब्रांच है 3 या 4 ब्रांच है, तो उन 3 या 4 ब्रांच को आप एक साइड रखोगे, क्योंकि वहां पे उनके बेसिस पे आप रखोगे करेंसी के बेसिस पे. जैसे आप जियोग्राफिकल सेगमेंट उनका कैसे करोगे, करेंसी के बेसिस पे. ऐसे ब्रांचेस जिसमें रुपीस चलता है, ऐसे ब्रांचेस जिसमें डॉलर चलता है. तो डॉलर वाली सारी ब्रांचेस जहाँ पे भी डॉलर चलता है वहाँ पे उस कंट्री में जो ब्रांचेस है उनको सेपरेटली रखोगे, और जिनमें रुपीस चलता है उनको सेपरेटली रखोगे. ओके, और जहाँ पे सीजनल बिजनेस चलता है, आप सीजनल और अनसीजनल के लिए भी कर सकते हैं. जिसमें सीजनल बिजनेस चलता है जिन कंट्रीज में, उनकी यूनिट्स को अलग रखेंगे, और जिनमें वो लोग होल ईयर बिजनेस चलता है उसकी यूनिट्स का डिफरेंट सेगमेंट में रखेंगे. तो इस टाइप से हम जियोग्राफिकल सेगमेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं. और इस टाइप से हम बिजनेस सेगमेंट्स में क्या करना है आपको, जो आपकी सेम यूनिट, जो सेम जिसका काम करने का तरीका, काम करने का वे टू वर्क सेम है, उनको डिफरेंट साइड में रखिए, और जिनको वर्क टू सेम है उनको डिफरेंट सेगमेंट में रखिए. जो एक तरीके के प्रोडक्ट्स और सर्विस देने वाले यूनिट्स हैं उनको एक साइड रखिए, जो एक डिफरेंट काइंड के यूनिट्स एंड प्रोडक्ट्स, ऐसे यूनिट जो दूसरे टाइप के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उनको दूसरे सेगमेंट में. ठीक है, so this is about business segment and geographical. Now you have to divide these business segment and geographical segment into primary or secondary segment. Okay, तो आपको ही बताना पड़ेगा कि आपका प्राइमरी सेगमेंट कौन सा है, बिजनेस सेगमेंट प्राइमरी है या जियोग्राफिकल सेगमेंट प्राइमरी. If you said business segment is primary, then automatically geographical segment will be secondary. If you say geographical segment is primary,
की होगी, लेकिन दोनों सेगमेंट्स की रिपोर्टिंग में फिर आपको क्या क्या देना होगा, क्या क्या नहीं होगा, प्राइमरी सेगमेंट की रिपोर्टिंग में आपको क्या क्या रिपोर्ट करना होगा, और सेकेंडरी जो आपका सेगमेंट है, सेकेंडरी जो रिपोर्टिंग सेगमेंट है उसमें आपको क्या क्या रिपोर्ट करना है, ये चीजें डिफरेंट होती है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो प्राइमरी में रिपोर्ट करनी है, कुछ ऐसी चीजें सेकेंडरी में रिपोर्ट करनी है जिसकी प्राइमरी में नीड नहीं है, और कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको सेकेंडरी में नीडेड है बट प्राइमरी में नीडेड है। Okay, so on the basis of this, these segments are divided in primary or secondary segment. If you said our primary segment is business segment, then that means geographical segment is automatically secondary segment. And when you said geographical segment is primary segment, then automatically business segment will become secondary segment. Okay. Yes. Now there is some terms to be understand, some definitions. First is reportable segment. So it is a business or geographical segment for which segment information is required to be disclosed. तो ऐसे segments जिनका reporting mandatory है, जिनको disclose, जिनके requirements को disclose करना जरूरी है, which is required to disclose, it is known as reportable segment. Okay. Then enterprises revenue. It is the revenue from sale made to the external customer as reported in the profit and loss statement. तो एंटरप्राइजेस रेवेन्यू क्या होगा, जो आपकी जितने भी एक्सटर्नल कस्टमर्स हैं उनसे जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस होगा, जो भी प्रॉफिट होगा दैट विल बी नोन एज एंटरप्राइजेस रेवेन्यू। जो भी सेल्स रेवेन्यू होगा फ्रॉम द एक्सटर्नल कस्टमर विल बी नोन एज एंटरप्राइजेस रेवेन्यू। ओके, देन नेक्स्ट इज सेगमेंट रेवेन्यू। तो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सेगमेंट रेवेन्यू? सेगमेंट रेवेन्यू इज द टोटल ऑफ एक्सटर्नल सेल्स प्लस इंटर डिपार्टमेंट सेल्स। So in segment revenue, you will include external sales plus inter-department sales also. If one segment is providing is selling something to another segment, then that inter-department sales will also be included. Okay. Then what do you understand by segment expenses? Segment expenses are a total of expenses relating from the operating activities of segment directly attributable to the segment, and portion of enterprises expenses that can be allocated on the reasonable basis of segment, including expenses related to transaction with other segment of the enterprises. So you will first include in segment expenses the expenses which is directly attributable to a particular segment. Okay? तो एक किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के एक्सपेंसेस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक्सपेंसेस इन पर्टिकुलर सेगमेंट के हैं, वो आपको सेगमेंट के एक्सपेंसेस लेना है। एंड ऐसे एक्सपेंसेस जो आप क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि किस सेगमेंट का है, बट ऑन द रीजनेबल बेसिस आप ये बोल सकते हो कि ये एक्सपेंस इस सेगमेंट से रिलेटेड है, तो उन सेगमेंट्स को भी आपको रिकॉर्ड करना है, उन एक्सपेंसेस को भी आपको सेगमेंट एक्सपेंसेस में इंक्लूड करना है। तो पोर्शन ऑफ द एंटरप्राइजेस एक्सपेंसेस, द पोर्शन ऑफ all enterprises expenses that can be allocated on a reasonable basis to a particular segment. Okay, that segment expenses will also be included in a particular segment expense. Okay, yes. Then segment result. What will be the segment result? Segment revenue minus segment expenses will be segment result. Segment assets. What is the segment assets? These are operating assets employed by segment in its operating activities and either directly attributable to the segment or can be allocated to a segment on a reasonable basis. So segment assets कौन सी assets होगी? All the operating assets which is directly attributable to a particular segment and either directly attributable to segment or can be allocated on a segment on a reasonable basis. या तो सीधा का सीधा एक particular assets एक particular segment से related हो, या फिर पूरे enterprises की जो assets है उसको एक reasonable basis पे आप उस segment पे allot कर सकते हैं, तो वो सारी assets को आपको include करना है segment. Then what is segment liabilities? Segment liabilities are operating liabilities employed by a segment in its operating activities of a segment and either directly attributable to segment or can be allocated to a segment on a reasonable basis. So same कि जो ऐसी liabilities जो operating liabilities है, जो segments में operations चलने की वजह से जो liabilities incur हो रही है वो liabilities, plus ऐसी liabilities जिनको आप सीधा सीधा segment में attribute कर सकते हैं, या पूरे enterprises की ऐसी liabilities जिनको एक reasonable basis पे आप उस segment में allocate कर सकते हो, so that will be known as segment liability. Okay. Yes. Then next
your customer and from transaction with other segments is 10% or more of the total revenue of all. अगर किसी पर्टिकुलर सेगमेंट की सेल्स रेवेन्यू पूरे एंटरप्राइजेस के सेल्स रेवेन्यू से 10% या उससे ज्यादा है तो वो सेगमेंट रिपोर्टेबल होगा. अगर वो ये फुलफिल कर देता है, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल कर देता है, देन वी हैव टू चेक सेकंड कंडीशन, वी हैव टू गो ऑन सेकंड टेस्ट. So what is second test? Segment result is 10% or more of the following, whichever is greater in the absolute amount. Combined result of all segments profit and combined result of all segments loss. Okay. So about the segment result, आपका जो भी सेगमेंट है उसका जो सेगमेंट रिजल्ट है वो पूरे एंटरप्राइजेस की सेगमेंट रिजल्ट से 10% या उससे ज्यादा होना चाहिए. ओके, तो वो आपका कंसीडर होगा एज अ रिपोर्टेबल सेगमेंट. इफ segment fulfill first test, pass first test and also pass second test, then we will take third test in procedure. Let's see what is the third test. Segment assets are 10% or more of total assets of the segment. So जो भी segment के particular segment की जो भी assets है, that must be 10% or more of total assets of all the segments. जितने भी segments हैं उनके आप assets का total करोगे और इस particular segment की assets उससे 10% या इससे ज्यादा की है, then that means that particular segment is reportable segment, otherwise non-reportable segment. Okay. Yes. Now let's move on. Next is segment accounting policy. So which accounting policy should we follow for segment reporting? Segment information must be prepared as per the accounting policies adopted for preparing and presenting the enterprise's financial statement. Furthermore, assets and liabilities that are jointly related to two or more segments should be allocated on the respective statements, provided their related revenues and expenses are allocated to such segments. So see, आपको सेगमेंट्स की रिपोर्ट करने की अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होगी, सेगमेंट्स की अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होगी, सेगमेंट की अकाउंटिंग पॉलिसी एग्जैक्टली सेम होगी जो कि पूरे एंटरप्राइजेस की अकाउंटिंग पॉलिसी. ओके, और जो ऐसी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है जो कि दो से ज्यादा सेगमेंट से रिलेट करती है या उनके ऊपर एलोकेटेड है, तो प्रोवाइडेड देयर रिलेटेड रेवेन्यू से एक्सपेंसेस आर टू और मोर सेगमेंट्स शुड बी एलोकेटेड टू द रिस्पेक्टिव स्टेटमेंट. तो उन एसेट्स और लायबिलिटीज अगर कोई जॉइंटली सेगमेंट्स में है तो उन एसेट्स और लायबिलिटीज को कैसे अलॉट करना है, तो उन एसेट्स की वजह से कौन से डिपार्टमेंट्स को रेवेन्यू या फिर कौन से डिपार्टमेंट में रेवेन्यूज हो रहे हैं, कौन से डिपार्टमेंट में एक्सपेंसेस हो रहे हैं. ओके, तो उनके बेसिस पे उन लायबिलिटीज को आपको सेगमेंट्स में डिवाइड करना चाहिए. एसेट्स और लायबिलिटीज को सेगमेंट्स में डिवाइड करना है. तो उन एसेट्स और लायबिलिटीज से जिस सेगमेंट को रेवेन्यू हो रहा है, जिस सेगमेंट का एक्सपेंस हो रहा है, उन एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वजह से उन सेगमेंट में उन लायबिलिटीज और एसेट्स को डिवाइड करें. So basically, what will be the accounting policy for segment? So accounting policy of segment will be same as the accounting policy of the whole enterprise. Okay. Yes. Now let's move on. Primary reporting format. What will be the format of reporting of primary segment? So following are the items that an enterprise must disclose for each reportable segment. So for each reportable segment, these items must be disclosed. Suppose you have to disclose segment revenue, then segment result, then total carrying amount of segment assets, total amount of segment liabilities, cost incurred in a given period to acquire the segment assets, expenses included in segment is result of depreciation and amortization pertaining to the segment assets for the period, significant non-cash expenses other than depreciation and amortization in respect of segment assets that are included in segment expenses and thus deducted by the measuring segment result. So all these revenues and expenses you have to report for the reportable segment. These items have to be disclosed in the reportable segment. Okay. Then furthermore, an enterprises need to disclose depreciation and amortization expense as well as non-cash expenses of a segment if report of amount of cash flows arising from operating, investing and financial activities of such type. See, यहाँ आपको बोला गया कि depreciation and amortization expenses को आपको रिपोर्ट करना है और नॉन कैश एक्सपेंसेस को आपको रिपोर्ट नहीं करना है अदर देन depreciation और amortization. बट यहाँ आपको एक नोट दे दिया गया कि आपको depreciation और amortization expenses को भी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं.
फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और फोर्थ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी के वो अगर आप रिपोर्ट कर रहे हैं, आप डिस्क्लोज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं। ओके, in addition to this, the enterprises should also present a reconciliation between the information disclosed for the reportable segment and aggregate information in the enterprises and financial statement. तो आपको रिकंसाइल भी करना है, क्या रिकंसाइल करना है आपको कि पूरे डिपार्टमेंट, पूरे एंटरप्राइजेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या इंफॉर्मेशन है, एग्रीगेट इंफॉर्मेशन और आपकी पर्टिकुलर सेगमेंट की इंफॉर्मेशन क्या है, वो दोनों ही आपको डिस्क्लोज करनी है। ओके, यस, नाउ लेट्स मूव ऑन सेकेंडरी सेगमेंट इंफॉर्मेशन। तो व्हाट items must be disclosed in the case where there is secondary segment information. Secondary segment, when there is secondary segment, so what information must be disclosed? So see, if primary segment reporting format is business segment, if we assume that business segment is our primary segment, then what will be the reporting requirement? Following information should also be reported. In the case when you consider primary segment is business segment, then following condition must be reported in secondary segment. So what will these items? Segment revenue from external customer by geographical area based on the geographical location of customer, provided the revenue from sales to external customer for each geographical segment is 10% or more of the enterprise's revenue. अगर आपका segment revenue, geographical segment revenue आपके पूरे enterprises के revenue से 10% या उससे ज्यादा है, तो फिर आपको ये information record करनी, ये information report करनी। Okay? Second, if total carrying amount of segment assets is geographical location of assets, provided segment assets for each geographical segment are 10%. तो अगर आपका geographical segment secondary segment है और आपकी geographical segment की total assets पूरे enterprises की total assets से 10% या ज्यादा है, तो आपको इसको report करना है। And then last, total cost incurred during the period to acquire the segment assets expected to be used for more than one period by geographical location of assets, provided segment assets of each geographical segment are 10% or more than the total assets of geographical assets. तो remaining जितने भी geographical assets हैं आपके, remaining जितने भी geographical segment है, उनकी जितनी भी geographical assets है, उससे इस particular geographical segment की assets 10% या उससे ज्यादा है, तो ये particular जो भी geographical segment है आपका, particular geographical segment will be reportable segment. Okay, so these are the three conditions in which the geographical segment will be geographical segment is secondary segment. Then it will be considered if that segment fulfills these three conditions, then geographical segment will be reportable. Otherwise, not. Okay. If the primary segment reporting format is geographical segment, if we assume that the geographical segment is primary segment and business segment is secondary segment, then there are cases where primary format of segment reporting is geographical segment, whether based on location of assets or location of customer. There are cases where primary format of segment reporting is geographical segment. Okay. In such a case, the enterprises should also report following segment information for each business segment having revenue from sales to external customers to equal 10% or more enterprises revenue, or having segment assets equal to 10% or more of the total assets of business segment. So basically in ऐसे cases जहाँ segment information for each आपकी, जहाँ आपने geographical segment को primary segment consider किया है और business segment को secondary segment consider किया है, और business segment का business segment के revenue जो है वो sale from external customer या segment revenue किसकी इक्वल है, या तो 10% के इक्वल या 10% से ज्यादा है ऑफ द टोटल एंटरप्राइजेस रेवेन्यू। तो टोटल एंटरप्राइजेस के रेवेन्यू से एक सेगमेंट की रेवेन्यू, बिजनेस सेगमेंट की रेवेन्यू 10% या इससे ज्यादा है, या फिर एसेट्स 10% या ज्यादा है पूरे बिजनेस सेगमेंट की एसेट्स से, होल बिजनेस सेगमेंट और होल एंटरप्राइजेस की एसेट्स से 10% या उससे ज्यादा है आपकी सेगमेंट की एसेट्स, तो दैट मींस योर बिजनेस सेगमेंट इज रिपोर्टेबल। और क्या क्या रिपोर्ट किया जाना चाहिए? सेगमेंट रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर, टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ सेगमेंट एसेट्स, और टोटल कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड टू एक्वायर्ड सेगमेंट एसेट्स एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड ड्यूरिंग मोर देन वन पीरियड। तो ये तीन चीजें आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी व्हेन योर बिजनेस
you have to report when a business segment is your secondary segment. What you have to report? Segment revenue from external customers, total carrying amount of segment assets, and total cost incurred during the period acquired segment assets expected to use during more than one period. तो जितनी भी कॉस्ट आपने एक्वायर करी है किसी सेगमेंट की एसेट्स को एक्वायर करने के लिए जितनी भी कॉस्ट आपने लगाई है उस पूरी कॉस्ट को आपको रिपोर्ट करना है. ओके, so this is all about your how